सो हेलो एवरीवन, अभी हम आते हैं नए टॉपिक पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर इंटीग्रेशन में। बहुत सारे इंटीग्रल्स हैं जो हमसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते। जैसे हमने कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस देखे, लाइक इफ यू गेट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, सो वी रोट इट माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट अगर मेरे पास साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे कोई और लीनियर चीज़ आ जाए, in place of angle, if I get something linear here, it will be a bit difficult for me to simplify directly. ऐसे जैसे मेरे पास अगर ये आ जाता है फंक्शन sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, सो इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना उतना इजी नहीं है। स्पेशली मैं रूट वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे पता है अगर ये रूट इस बाइनोमियल के बजाय अगर इस मोनोमियल के ऊपर होता, ठीक है, सो व्हाट आई कुड हैव डन इज आई कुड हैव अप्लाइड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं सेपरेट करके उनको इंटीग्रेट कर सकता था। तो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अब ये हमारे पास इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये फंक्शन होते, जब भी आप किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करोगे, सपोज करो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया टी, ये जो उसका डिफरेंशियल है उसको भी न्यू वेरिएबल में लाना पड़ेगा। दिस डी एक्स इज ऑल्सो टू बी कन्वर्टेड टू डी टी, राइट। इस डिफ्रेंशिएशन को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम फंक्शन को उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव भी उसके पास हो। सो व्हाट आई डू हियर इज आई टेक इट टॉपिक वाइज। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अप द क्वेश्चंस दैट कंटेन्स रूट। नाउ when to substitute under root and when you have to substitute only the term that is inside the under root. बहुत बार ये confusion रहता है कि should I substitute the root or should I not. Right, so question is, what I'm going to discuss with you is, if we get this type of questions, the doubt is when to substitute root and when only the function, right. अब हमें पता है कि हम जिस भी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। अगर मेरे पास मैं रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स को पुट करता हूँ something like t, if I differentiate both sides, right, if I differentiate both sides of this function, so then what do I get is 1 upon 2 root f of x. हम सबको differentiation is very clear, root x का derivative 1 upon 2 root into f dash of x dx is equal to dt. So what I need is an additional root f of x in the denominator, राइट। सो अगर एक एडिशनल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है तो मैं रूट पुट करूंगा। अगर सिर्फ एक ही रूट है पूरे इक्वेशन में, सो आई विल सब्स्टिट्यूट ओनली द थिंग इनसाइड द रूट बट नॉट द रूट, राइट। सो आई वोंट बी वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, आई विल टेकिंग सम सिंपल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। लाइक देयर इज अ क्वेश्चन, integration under root of x plus 2 dx. Let me take the simplest one first. Now if I have to, there is only one root in this integral, so what I'll do here is I'll put the thing inside the root. So when I substitute it, differentiating both sides, what do you get is dx is equal to dt, or what do you say here is differentiating both sides with respect to x, you get 1 is equal to dt upon dx, and you have studied this property of differential operator, dx will go to the left hand side, so dx equals to dt. So now I will be equal to root t, and in place of dx you will have new differential operator. तो सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास तीन चीज़ें सब्स्टिट्यूट होती हैं जब भी होती है। पहले एक फंक्शन, दूसरे नंबर पे उसका डिफरेंशियल, और तीसरे नंबर पे लिमिट्स। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डेफिनेट में, राइट। सो whenever you have to substitute, you have to think about these three things. ये तीन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। Now this is very simple. This is t raised power 1 by 2 dt. इंटेग्रेट कर लो, t raised power 3 by 2 upon
3 by 2 plus c. So this will be equal to 2 by 3. T raised power 3 by 2 plus c. This is 2 by 3. What was the value of t? Again function original variable में वापस आएगा, and this is 2 by 3 x plus 2 whole raised power 3 by 2. Right, sir? Done and dusted. So this is how do you do type 1 when there is only one root involved. Right, so there could be many more questions based on this concept. The important thing is only to know when to substitute root and when not to substitute the root. That's it. Nothing more. Right? Like we have got another question here. This is I is equal to x into root of 1 plus 2x square dx. Right? Again, if you look at this question, there is only one root. So you cannot substitute the root. You will substituting the thing inside the root. So 1 plus 2x square equal to t ले लेंगे आप. This will give you 2 into x square का derivative is 2x dx is equal to dt. This will give you 4x dx is equal to dt. We have got this x, we have got this dx. So x dx is equal to 1 upon 4 dt. So I is equal to 1 by 4 being constant will come out. It will, the x into dx will become dt, and this will be root of t, and rest you know it is exactly the previous question, right? So let me have one more. So I is equal to integration of root of x plus 3, let me say. Again there is only one root, right? So I will be substituting x plus 3 equals to t, differentiating 1 is equal to dt upon dx. So this will give you that dx is equal to dt. So I will be dt upon root t, and rest you know that is t raised power minus 1 by 2. You can integrate it further, right friends? अब मेरे पास रूट कब पुट होगा, इसका अभी तक हमने कोई भी एग्जांपल डिस्कस नहीं किया. वापिस दोहरा रहा हूं मैं, रूट तभी पुट हम करेंगे अगर एक एडिशनल स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में होगा. अगर एक एडिशनल स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होगा सो हम रूट्स पुट नहीं करेंगे. लाइक देयर इज अ क्वेश्चन I is equal to dx upon x minus root of x. ये थोड़ा सा बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन रहता है. If you talk about taking something common, इन दोनों में से रूट x कॉमन आ जाएगा, ये रूट x माइनस 1 बचेगा. क्यों बचेगा ऐसा? क्योंकि x कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, राइट? सो x कैन बी रिटन एज रूट ऑफ x होल स्क्वायर, एंड व्हेन यू राइट x इक्वल टू रूट x होल स्क्वायर, तो आपके पास x माइनस रूट x विल बी रूट x स्क्वायर माइनस रूट x. From this you can have root x common, so it will be root x minus 1. Right? Now here, if you look at these two, so there are two terms containing the root. Root के अंदर सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है? अब जब भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आप उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? टू मेक द फंक्शन सिंपल. और दूसरा ये होता है कि कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करने से फर्क नहीं पड़ता, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. So I'll take up this term. So this time I'm substituting the root. I hope it is clear to everyone. This time I'm substituting the root. So this will be equal to t, and this will give you 1 upon 2 root x dx is equal to dt. And this will give you dx upon root x equal to 2 dt. Right? So this root x was required for differential actually. So I is equal to 2 बाहर आ जाएगा dt upon t, and you know this is equal log of t plus c, right? You can integrate it further. It have to reduce it to the simpler form. Let me take another example where root can be substituted. Like this is a question here. E raised power root x upon root x dx. Right, sir? So what you will do here is, this is root of x, and whatever the root, if you want to substitute, the same root should be there in the denominator. So I have already shared one document with you people in which I have given you all the formulae and all the techniques. So this root of f of x has to be there in the denominator.
सो यू टेक दिस रूट ऑफ x इज इक्वल टू t, एडिशनल है हमारे पास इसलिए रूट साथ में पुट हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल गिव यू दैट 1 बाई रूट एक्स dx इक्वल टू dt. ठीक है जी. सो दिस थिंग विल बिकम dt. सो I इज इक्वल टू et dt एंड दिस इज इक्वल टू et प्लस c, और आंसर द लास्ट में ओरिजिनल फंक्शन में ही आना चाहिए. So this was the first case where we talked about when to substitute root or when to substitute the thing inside the root only. That was type 1. Now if you talk about type 2, you'll see so many questions and integrals in log functions. ठीक है. अब sometimes we are substituting log function only and sometimes we are substituting the domain of the log function. Now when it has to be done, right? So when if you get a question of the form log of f of x, so when you will be substituting log of f of x and when you will be substituting only f of x, you will be substituting log of f of x if an additional f of x will be there in the denominator of the integral. अगर ऐसा होगा तो log पुट हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो log पुट नहीं होगा. So like there are so many examples. I'll take up the first one. I is equal to dx upon x into 1 plus log x. और एक चीज और याद रखिएगा, आप कभी भी फंक्शन का एक पार्ट पुट नहीं कर सकते, हमेशा पूरा फंक्शन पुट होगा. प्लस माइनस में अगर आप log x पुट करना चाहते हो सर प्लस 1 हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड, है ना. जैसे आपके हाथ को छोटी सी कभी चोट लग जाए तो आप अपना हाथ नहीं हॉस्पिटल भिजवाते हो, पूरा बॉडी साथ जाता है. तो होल फंक्शन इज यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट जस्ट वन टर्म ऑफ द फंक्शन. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. नाउ इफ आई वांट टू सब्स्टिट्यूट log x, मैं कब log x को t पुट कर सकता हूं, जिसके ऊपर log लगा है. log किसके ऊपर लगा है, x के ऊपर. अगर एक एडिशनल x कहां पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में. क्या इस क्वेश्चन में है? एग्जैक्टली. क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि log का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x. तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन x इक्वल टू dt अपॉन dx. हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल गिव मी 1 बाय x, dx गो टू द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है जी. सो I इज इक्वल टू dx अपॉन x, क्या बन गया मेरे पास, दिस इज dt अपॉन t. सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ t plus c. So answer is log of 1 plus log x plus c. Right sir. So log will be substituted only if log का डोमेन भी डिनोमिनेटर में हो और वो एडिशनल होना चाहिए. log यहाँ मर्जी हो, log न्यूमरेटर में हो, log डिनोमिनेटर में हो, लेकिन जिस चीज के ऊपर log लगा हुआ है वो सेम फंक्शन जो है वो भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी आप log पुट कर सकते हैं. अदरवाइज आप log पुट नहीं कर सकते, आप सिर्फ log का डोमेन पुट कर पाएंगे. लाइक देयर इज अनदर क्वेश्चन in terms of log x, it is x plus 1 and then it is 1 x plus log x whole square and it is whole divided by x dx. ठीक है सर. now again you look at the function log है यहाँ पे, बिल्कुल है. log का डोमेन क्या है हमारे पास, x है. क्या log का जो डोमेन है वो डिनोमिनेटर में है, एग्जैक्टली है. इसका मतलब log पुट हो सकता है, और आपको मैंने बताया जब भी पुट होगा तो पूरा फंक्शन पुट होगा. सो आई पुट x प्लस log x इक्वल्स टू t. एक्सपोनेंट्स को पुट करने की जरूरत नहीं होती, आप बेस पुट कर सकते हो, नहीं तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट दिस विल गिव यू 1 प्लस 1 बाई x dx इज इक्वल टू dt. एलसीएम ले लो, x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt. हैव अ लुक एट दिस. है ये सारी की सारी चीज या नहीं है, एग्जैक्टली ये पूरी चीज इंटीग्रल में है. सो अगर इस इंटीग्रल का नाम i था, सो i इज इक्वल टू दिस होल थिंग इज dt, दिस इज t स्क्वायर dt, राइट. तो दिस होल थिंग ना, दिस वन दैट इज x plus 1 upon x into dx, right. So this is equal to t cube upon 3 plus c. You substitute for t whatever the value of t is. What was t? x plus log x. तो बन गया x plus log x
whole cube upon 3 plus c. So this is how do you do it, right? So this is the way you can do it. Let's have another example. So let's have another example of log, and this is here the domain of log is actually trigonometry, and the question is quite an interesting one. The question is log of sin x into cot x dx, right? So log of sin x into cot x dx. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इनविजिबल मैन के जैसा क्वेश्चन हो रहा है. अगर आप देखो व्हाट इज डोमेन ऑफ लॉग, लॉग का डोमेन है sin x, राइट? तो अब cot x को आप कैन यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ sin and cos? ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ sin and cos. इफ यू टेक, सो दिस इज द डोमेन ऑफ द लॉग फंक्शन, है ना? तो क्या ये चीज डिनोमिनेटर में आ रही है? बिल्कुल आ रही है. सो आप log ऑफ sin x को t ले लो, डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. इसका मतलब कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो आई इज इक्वल टू टी डी टी and this is equal to t square upon 2 plus c. So this is how we can substitute log or root. So we have done these two. In the next video we will be talking about the rest, that is exponentials, polynomials and trigonometric. ठीक है जी, thank you so much.